Nitesh Bharti right here for you. Zordar taaliyan ho jaye. Painting the magic of Indian cinema. Let me present to you the Indian icon. The youngsters are looking up to him. He's entertaining one after the other, taking one after the other all the awards in our Indian cinema. He is the one and only Ranbir Kapoor. Please give it up for Ranbir Kapoor right here. Ranbir, a few words from you. Good afternoon, ladies and gentlemen. It's really a moment of pride and honor for me to be here to represent the Indian film industry in its full glory. Like Anmol Bhai said, that I've been fortunate enough to be part of a family that's been contributing for 84 years now, and I hope I can carry this legacy forward with some respect, dignity, and some good work. It's also a privilege to be associated with Color Screen Awards, a platform that's been honoring professional, excellent, excellence in the Indian film industry, and I hope that this year also the Color Screen Awards reaches great heights. And congratulations on celebrating 19 years of Indian film industry. Thank you so much, and I also must congratulate Nitin Bhai for this wonderful honor that he gave Indian film industry. I think it's one of the most beautiful things I've seen for a long time now. Absolutely, absolutely. You know what, Ranbir, अभी कुछ दिन पहले ही on 14th of December, राज साहब के बर्थडे पे मैंने अपना शो आरके स्टूडियो से किया था, और वहाँ पे एक तरफ जो रिसेप्शन पे एक तरफ पृथ्वीराज कपूर जी की तस्वीर है, वहाँ पे फिर राज साहब की तस्वीर है, डब्बू जी भी वहाँ पे थे, राजीव आपके डैड ऋषि जी भी वहाँ पे थे, and this whole generation of Kapoors, we can't feel it. Please explain, how does it feel to be a part of the first family of Indian cinema? Well, I wouldn't say I carry a chip on my shoulder, or there is a huge sense of ego that I have, that I come from this family. I think it's a responsibility. We are in this profession because we love it, and we are in it because of the audience. I think they have year after year, given us that much of respect, given us an opportunity to entertain them. Yes, Mr. Prithviraj Kapoor started it. My grandfather, Mr. Raj Kapoor, showed the way. My fathers, my uncles, my granduncles, my cousins, we all are in this profession is because we get so much of love and reciprocation from the audience. So I think all the credit must go to them, and I hope that even my future generation, like my son, my grandson, my daughter, my granddaughter, they all get a chance to be part of the Indian film industry. You guys have actually, within your family, itne sare screen awards hain. How special is Screen Awards to Ranbir Kapoor? But बहुत ही special है, because I remember when I was a child, और जो screen का जो the paper used to come, I used to really look forward to that weekly paper, क्योंकि सब the gossips and the rumors and industry में क्या हो रहा है, कौन क्या film कर रहा है, ये सब जानने का मौका मिलता था. And 5 years back, I got actually the Best Debut Award. Then they presented me the Best Actor Award last year. So it feels great, that it's a time when the entire film fraternity comes together to celebrate each other's work. And nothing better than Screen Awards, which, a platform which has so much of dignity, so much of, the jury members, the selecting process, everything comes with so much of thought, so much of love, so much of care, that it is really great to be part of such a platform. Wow. एक बहुत स्पेशल बात है जो आपको रणबीर नहीं बता रहे हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप सबको बताएं, because इस साल 19th Annual Color Screen Awards में the grand finale performance is going to be by Ranbir Kapoor and आप भी कर रहे हो? मैं कर रहा हूँ यार, लेकिन and Neetu ji. It's for the first time that Ranbir and Neetu ji are going to perform together on the stage, right?
Please tell us about Actually, मैं सच बोलूँ तो इस साल मेरा सिर्फ एक फिल्म थी बर्फी, and because I played Deaf Note इतने गाने नहीं थे, so I had to no, I'm just kidding. Because you know Hindi cinema is celebrating 100 years, so we all brainstormed and came with an idea to actually do some songs from my family, from Mr. Raj Kapoor to Mr. Shami Kapoor, Mr. Shashi Kapoor, my father, Mr. Rishi Kapoor, and then finally a song from Barfi. So we tried and conned my mother to do like a nice jig with me on stage on Parda Hai Parda and Lyric too. So I hope I don't mess it up. I hope you know I'm sure she's going to steal the limelight because she's always been such a wonderful performer. I'm nervous, I'm excited, and I hope that the audience likes it. Wow, super. Parda Hai Parda pe we are going to see Ranbir Kapoor with Neetu ji performing on the stage for the first time. It's for the first time? Right, super. Zordar taaliyan ho jaye. Thank you so much, Ranbir. And I think for a beautiful photo op right now, I would like to call back on the stage Raj and Priyanka. If you can join us back on the stage for a photo op with Ranbir. Yeah, please. Yeah. Well, it hasn't started yet. I hope to start it today, I hope. They haven't told me also yet. But yeah, you know, I have a lot of members in my family who are actors, so I think for the next 3-4 years I'll have some items up my sleeve, you know, to get some family member to dance with me. But I'm looking forward to it. She's very nervous, you know, she's not done something of this nature for the longest time. And I'm also working with on a movie right now called Besharam with both my parents. So it's a happy family time. We all are going to work together, you know. Happily. Hi, this is Achal, UTV Stars. Achal. Last time you performed with Rishi ji, this time with Neetu. Next time, any plans with Kareena? I actually tried to get her this time, but she wasn't available. She was traveling. But it would be lovely. It would be awesome to perform with her. She's also such a talented, such a you know, so much of achievements. I hope that she agrees to perform with me. I know that if we do a romantic number, it might seem odd because she's my sister. But we can do like a Raksha Bandhan song, Bhaiya Mere, you know, something of that nature. Hi Ranbir, this is Sunita from India TV. Hi Sunita. Ranbir, आप 16 कैटेगरी में आपकी फिल्म नॉमिनेट हुई है बर्फी. इसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? कितने एक्साइटेड हैं? Well, हमने स्क्रीन और कलर्स को बहुत बर्फियाँ भेजी थी to give us these many nominations. But feels great, you know, more than actually winning an award. I feel so happy that a film like Barfi has been received so well by the audience. You know, made so much of money. It just, you know, gives us an incentive to do films that we believe in. You know, films with good stories. It gives actors it gives me the confidence now to approach, you know, different characters, new characters, and not just play the same old conventional characters. And especially when a platform like Color Screen Awards honors it with so many nominations, it's only a pat on the back, and it's a reaffirmation that you know, if you do things from an honest place, do things that you believe in, you know, you will be successful. So I feel great that it's been honored. Okay, hi, my question is for Mr. Raj. Basically, Colors has been associated with so many awards and event functions now. How is it, you would like to tell us, how is it benefiting the channel? You'll have like 4 awards already on board. Yeah, the way we look at awards, I mean, there are awards and awards and awards. And one of the things that an award does for a channel is it brings in new audiences to the channel, I mean, who are not your regular soap audiences, and it increases the reach of the channel. And also, I think today Bollywood is glamour, and you have to have the glamour quotient for the channel. रणबीर हाय रेखा खान राइट में आपके राइट में हाय रेखा खान ये बीबीसी से रणबीर मेरा सवाल ये है कि आप किशोर कुमार की बायोपिक करने जा रहे हैं तो कितना आप उन्हें जानते हैं एज ए सिंगर एक एक्टर के तौर पे एक इंसान के तौर पे आई थिंक पूरा हिंदुस्तान यू नो किशोर कुमार को जानता है एज एन एक्टर मुझे एक मौका मिल रहा है टू यू नो डू हिज बायोपिक ऑन स्क्रीन बट अभी तक स्क्रिप्ट रेडी नहीं है जब जो हमारे डायरेक्टर हैं अनुराग बासु जब वो रेडी करेंगे तब मैं उनके साथ बैठूंगा मैं टाइम निकालूंगा बिकॉज आई थिंक इट्स माय ड्यूटी एज एन एक्टर कि अगर ऐसे इंसान को मैं स्क्रीन पर ला रहा हूँ और ऐसे बड़े दिग्गज इंसान को स्क्रीन पर ला रहा हूँ सो आई हैव टू डू फुल जस्टिस टू इट तो अभी तक तो कुछ काम शुरू नहीं हुआ है फिलहाल तो मैं सिर्फ बेशरम और ये जवानी है दीवानी में काम कर रहा हूँ बट जब टाइम आएगा 100% आई ट्राई एंड डू अ लॉट ऑफ मैं गाऊंगा नहीं तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है उनके गाने यूज़ करेंगे बट आई ट्राई एंड लुक लाइक हिम आई ट्राई एंड एक्ट लाइक हिम आई ट्राई एंड डू सर्टेन नुआंसेस एंड मैनरिज्म्स लाइक मिस्टर किशोर कुमार रणबीर जैसा कि सभी जानते हैं कि पूरा हिंदुस्तान उनके गानों के साथ में कनेक्ट करता है और स्पेशली आपके फादर के लिए उन्होंने बहुत ही यादगार गाने दिए हैं
तो उस लिहाज से आप खुद को कितना कनेक्ट कर पाते हैं उनसे? आई थिंक जब मिस्टर किशोर कुमार गाते थे तो दिल से गाते थे. आई थिंक एक हीरो के लिए बहुत आसान होता था क्योंकि आधा काम तो वो कर लेते थे अपनी आवाज़ से, अपनी पैशन से. जो मेरे फादर हैं उन्होंने बहुत गाने किए हैं जहाँ किशोर कुमार ने उनके लिए गाए हैं. एंड आई थिंक आई हैव ऑल्सो बीन लकी क्योंकि मैंने बजना है सिन्नू का रीमिक्स किया था. वहाँ भी उनकी आवाज़ थी तो मैंने भी 1-2 लाइन्स प्लेबैक कर लिए उनके साथ. सो या आई थिंक एक सिंगर का कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा होता है एक एक्टर की लाइफ में. अगर आप मुकेश जी का कंट्रीब्यूशन देखो मेरे ग्रैंडफादर के लाइफ में, मोहम्मद रफ़ी साहब, इन सो मेनी एक्टर्स, धर्म जी एंड मिस्टर विनोद खन्ना, मिस्टर अमिताभ बच्चन. सो आई थिंक हम ज़्यादा क्रेडिट देते नहीं हैं सिंगर्स को, बट वी मस्ट क्रेडिट देम विथ अ लॉट ऑफ लव. Who's next? Hello. Hi Ranveer, this is Mayur from Times Now. Hi Mayur. Today we are talking about awards, and like Barfi was nominated for the Oscars and unfortunately it missed out. Yes, I'm sure you will be disappointed like most of us. My basic question is did you initially expect it to go to Oscars, and are you like very disappointed in terms that it didn't even make it to the top 20 or so? टू बी ऑनेस्ट, जब हम बर्फ़ी फिल्म पर काम कर रहे थे तो किसी के पास इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि हम ये फिल्म चलेगी या ना चलेगी, ये फिल्म लोग आएंगे थिएटर में देखने के लिए. अवार्ड्स तो बहुत दूर की बात थी. तो एवरीथिंग विद बर्फ़ी हैज़ बीन अ सरप्राइज फॉर अस एंड अ प्लेजेंट सरप्राइज फॉर अस. वी नेवर एक्सपेक्टेड एनीथिंग आउट ऑफ इट. Yes, we were just amazed at Mr. Anurag Basu's dedication, his belief in a subject like this, and we just went with that. तो जब ऑस्कर की बात होती है then मैं अवार्ड्स को इतना क्रेडिट नहीं देता. आई थिंक इट्स ग्रेट अगर मिलता है, अगर नहीं मिलता इट्स फाइन. आई थिंक व्हाट रियली मैटर्स इज द ऑडियंसेस लव. अगर वो फिल्म को पसंद करे दैट मैटर्स. ऑस्कर के दौरान बहुत सारे कंट्रोवर्सीज आ गए थे अबाउट प्लेगरिज्म एंड ऑल ऑफ दैट. तो थोड़ा बुरा लगा क्योंकि दादा ने बहुत मेहनत से काम किया था, दिल से और लगन से काम किया था. इट वाज हिज होमाज to greats like Buster Keaton and Charlie Chaplin. तो वहाँ थोड़ा I was disappointed there more than it not being nominated for the Oscars. But अगर ये नहीं तो कुछ और ही सही. I hope some film from India, if not mine, some other actors' film, some other directors' film gets nominated, and not only nominated, they win the Oscars, and not just foreign language, the best director, best actor, best film, and I'm sure one day we'll achieve that. Well, the response actually only comes from my mother, and she gets very excited. So she's the happiest person in the world when something is related to me. But I'm really happy. Like I said earlier, it's such a prestigious platform, and I hope that Barfi wins some awards. I hope we get celebrated well. Well, my character became popular because the film became popular. I think it's as simple as that. I don't think you can, segregate a performance or an actor from a movie. अगर फिल्म अच्छी है तो सब अच्छी है. अगर फिल्म अच्छी नहीं है, then कुछ नहीं चलता. So I think all the credit must go to the film and Anurag Basu. उम्मीद तो मैं इतनी रखता नहीं हूँ, बट मिलता है तो अच्छा है. सोने पे सुहागा होता है. और जगह बनानी पड़ती है घर पे, शेल्व्स बनाने पड़ते हैं. एक अच्छा सा जब कोई घर पे आता है तो सबसे पहले हमको वो कॉर्नर लेकर जाते हैं, बोलते हैं अरे यार ये क्या है, अच्छा इतने सारे अवार्ड्स हैं. तो अच्छा लगता है, बट मैं ज़्यादातर कोई उम्मीद रखता नहीं हूँ. आई एम जस्ट हैप्पी टू बी नॉमिनेटेड. आई एम जस्ट हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ द सेरेमनी. Ranveer, the journalist in me is taking over now. So what I want to ask both of you, you've seen our nominations, Raj and Ranveer. What I want to ask you is that do you feel that it represents the changing tastes in cinema? Different kinds of cinema has been represented. I wanted your reactions on that because obviously we are very closely involved with it. But from both of you as viewers, as somebody who is acting in the movies, do you feel that different kinds of cinema have been adequately represented in our nominations? Well, a lot of it has been said. Films like Barfi, Kahani, Pan Singh Tomar. Yes, these are films, of a certain nature. They're different. That's why they're nominated. But at the same time, you have films like Dabang and Rowdy Rathod and Agnipath, which are great commercial, popular films. And I think if you balance it out, that's what represents the Indian film industry. It's not only trying to experiment and trying and being different. It's also trying to celebrate Indian cinema, give entertainment to people, about heroism and songs and dances. So I think it has to be a mix of everything. It has to be a balance. And I think this year, you guys have really nominated all these films
and really giving credit to a healthy mix of genres. Raj, You said it all. you say you feel the same way. Definitely. Right. My question's for Priyanka. Priyanka, there's a notion that awards are rigged. How do you keep it a fair game? The good thing about Screen मुझे तो Awards. प्रॉमिस किया था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में आओगे तो अवार्ड मिलेगा. Yes, you were not supposed to speak about it. But no, seriously. Yeah, there is that impression that awards are rigged. But with Screen Awards, we have a jury which kind of decides on all the nominations and the winners. So there is no, and that is set in stone. We don't, sort of change that at all. And the jury meets, they discuss. They have, each of them have their own points of view. Each member has its own point of view. And they put it forward, they discuss, they disagree, and finally they choose to agree over certain choices. And those are the winners that are announced every year. So I can't comment about other people, but that's the process that we follow at Screen. And it's been pretty much, it's the 19th year and it's gone down pretty well. And even the industry has accepted it, even if the choices have been unconventional in certain years. So, yeah. Okay, one last question from the lady there. Harshita from Channel One. You have become a youth icon. We can see so casually around se aake baith gaye nicely. Sorry. We all are liking it. No issues. Apart from this, आप फिल्में भी जो कर रहे हो तो उनके टाइटल बेशरम और जवानी है दीवानी है. Is it only youth centric or like you targeting everybody? How आपकी पिक्चरें तो स्ट्रॉन्ग होती है पर नाम ऐसे क्यों होते हैं बेशरम और जवानी है दीवानी? वेल मैं जो मेरी उम्र है मैं उस उम्र की कैरेक्टर्स प्ले करूँगा. मैं अभी कोई 50 साल का किरदार निभाना नहीं चाहता. अगर कुछ इंटरेस्टिंग कैरेक्टर हो तो मैं करूँगा. बट जहाँ टाइटल्स का सवाल है जैसे बेशरम, ये जवानी है दीवानी, फिर रॉक स्टार, आई थिंक टाइटल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन एन एक्टर्स लाइफ. क्योंकि जब 30 साल बाद लोग शायद मेरे फिल्में को याद नहीं करेंगे बट ये टाइटल्स को याद करेंगे. जैसे इफ़ वी स्पीक अबाउट मिस्टर बच्चन, वी रिमेंबर हिम फ्रॉम शहनशाह and so many of his films, and Dharamji from Dharamveer, and Mr. Salman Khan from Dabang and Tiger. So I think titles play a very big part in remembering an actor. So I'm okay with Besharam, Jawani Diwani. It's fun. Your character is like the name of your title, Jawani hai Diwani, Besharam. हाँ, सब मेरी लाइफ में देखकर कि मैं कैसा हूँ उसी टाइप का टाइटल्स रखते हैं. रणबीर, एक सवाल जो इन दिनों सभी के दिलों में है वही सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी. जो आशाराम बापू ने हाल ही में एक भाषण में ये कमेंट किया था कि दिल्ली रेप विक्टिम अगर उस इंसिडेंट्स के वक्त उन लड़कों से माफ़ी मांग लेती या उन्हें भाई कह देती तो शायद ये मैटर नहीं बढ़ता और ये सब नहीं होता. आपको क्या लगता है कि ये कितना सही है? आपका क्या कमेंट होगा? ये बिल्कुल सही नहीं है. एंड आई थिंक ही नीड्स टू गेट हिज हेड चेक्ड. We're done. We'll be. Right, thank you so much. Thank you so much for all the questions. नहीं, we can take 2-3 more questions. अच्छा. हाँ, बोलो ना. इधर. रणवीर का ये सच है कि आप रीमेक में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है. पिछले दिनों ये खबर आई थी कि आपको खेल में ऑफर हुई थी और आपने मना कर दिया. नहीं, मुझे खेल में ऐसी कोई फिल्म ऑफर नहीं हुई थी. मेरा सिर्फ ये मानना है कि अच्छा टाइम चल रहा है फिल्म इंडस्ट्री का. नई सोच आ रही है, नए डायरेक्टर्स आ रहे हैं, तो मैं क्यों करूं जो पहले से किसी ने किया है. अगर मैं अपनी फादर की कोई फिल्म उठाऊं या कोई मिस्टर बच्चन की फिल्म उठाऊं, मैं उनसे बेटर तो कर नहीं पाऊंगा. तो मैं क्यों अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारूं. तो माइट एज वेल ट्राई समथिंग न्यू एंड इट्स अ सेफ genre to dabble in. So that's why I don't believe in remakes. But maybe after 10 years, अगर कुछ काम नहीं मिल रहा और सिर्फ remakes मिल रहे हैं तो करना पड़ेगा. रणबीर, आलोक here from OFM. मेरा एक सवाल है कि इतनी सारी लेडीज आपके घर में आ चुकी हैं पिछले साल में भी और इस साल भी आएंगी, तो क्या काउंट होगा अभी लगभग? एक मिनट, ये स्क्रीन लेडी है कि लेडा है? लेडी है. अच्छा ही लगता है. कभी कभी काले होते हैं, कभी गोल्डन होते हैं. सो इट्स लवली, इट फील्स ग्रेट. काउंट क्या होगा लगभग? कितने सारे आ गए होंगे? काफ़ी है क्योंकि अवार्ड्स भी कितने सारे आजकल. तो बट आई थिंक विद स्क्रीन आई हैव 4 स्क्रीन अवार्ड्स.
I've completed 5 years in the industry and I've won 4 Screen Awards, so I think I feel very good about it. And hopefully now with my 5th year, if I win, तो 5 and 5 हो जाएंगे. I heard Shah Rukh sir has the most Best Actor awards. I think he or Mr. Dilip Kumar has. Mr. Shah Rukh Khan has, and he's a great inspiration, and it's very it's contagious. You win an award one year, फिर आपको और जीतना है, then you'll work harder. So it's a very healthy sign for an actor. सिनेमा के 100 साल के बारे में भी बात की जाएगी स्क्रीन अवार्ड्स पे. कौन सा ऐसा किरदार था जो आप करना चाहें किशोर दा के अलावा वाला, कोई ऐसी फिल्म, कोई पर्टिकुलर पिछले 100 सालों की सिनेमा की? Well, 2 किरदार होंगे and I think they're polar opposite. एक तो होगा my grandfather's character in Shri 420. I think that's one of the most lovable and endearing characters. At the same time मुझे मुगैम्बो भी play करना है. मेरे हिसाब से विलेन की लाइफ बेस्ट होता है. वो अमीर होता है, आजू बाजू लड़कियां होती है, अच्छी गाड़ी होती है, इसी इवेंट में उसको मरना पड़ता है. तो I think playing a villain is also great, and I hope and I really want to play a bad guy. So please spread the word. क्या बात है? देखिए सिंपल सी बात है, अगर मुझे अवार्ड मिलता है तो मैं सोचूंगा कि सही सोचते, अगर नहीं मिलता तो बोलूंगा कि रिग्ड है, कि लोग को पता नहीं सेम यूज़ कर रहे हैं. मैं एक्चुअली इसके बारे में मैं क्या बोलूँ, एज इन सच प्लेटफॉर्म्स लाइक स्क्रीन, दे हैव सो मच ऑफ एक्सपीरियंस एंड इंटेलिजेंस टू चूज द राइट जूरी मेंबर, एंड आई डोंट थिंक सेम जूरी मेंबर्स होते हैं. आई थिंक एवरी अवार्ड शो हैज़ डिफरेंट जूरी मेंबर्स, एंड द जूरी मेंबर्स आर ऑल्सो prominent personalities in the Indian film industry with a lot of achievements, with a lot of experience, and a lot of hard work that they've put in. So जो भी उनकी choice होगी, I'm sure that it comes from a place of thought. So you can't really belittle them by saying कि ये rigged है या same jury member है. ऐसा मत बोल, निकाल देंगे तुम्हें ऐसे. रणवीर, क्या बेशरम में आपके मॉम डैडी आपके पेरेंट्स प्ले कर रहे हैं? नहीं जी, वो मेरे पेरेंट्स नहीं प्ले कर रहे, बट दे प्लेइंग 2 कैरेक्टर्स. बहुत ही इंटरेस्टिंग सा रिलेशनशिप है हमारा, बट दे नॉट माई पेरेंट्स. और ले रणबीर जी, पता नहीं क्या बोलते हैं? और है ना? है. Thank you. Ranbir, everyone is talking about Murphy. It's Murphy everywhere. It's Ranbir anywhere. So looking at such good success, how Murphy reacts to it? And Ranbir? Well, to be honest, I'll give a very modest answer, but शुरुआत से, when my first film Zavira released, it was a disaster, and it didn't really affect me too much. So I don't get affected by success or failure. I'm just happy to the fact that I got to work with Anurag Basu and a character like this, and I hope in the future also, I concentrate more on my movies than the success and failure of a movie. I think that is, आप जैसे मिस्टर आमिर खान ने 3 Idiots में कहा था कि काबिल बनो, कामयाबी छक मार के आपके पीछे आएगी. I think I follow that mantra, and everyone, I think all of us, if we follow that, we'll all be successful in life. मैं हर साल, क्योंकि मैं न्यूयॉर्क में पढ़ता था, मैं वहाँ स्कूल गया था, फिल्म स्कूल. 4 साल मैंने रहा वहाँ. So I go there every year. I have lots of friends who studied in New York, and we all come together and we celebrate New Year's every year. I think we can close. He's back to playing Murphy. All right, thank you so much. Thank you so much for this response. Yeah. All right, thank you so much, everybody, for being here and being so patient. Yes.